approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters, and that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely? And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed, and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that, obviously, to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like very good. So we'll probably expand that. We're winning Michigan, but I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes, and 65% of the vote is in. And we're winning Wisconsin. So we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many. We had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461,000. Think of it. Almost 500,000 votes. North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win it.
So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. And I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. And Mr. Vice President, say a few words, please. Please. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant. तौर पर तस्वीरें देख रहे थे, खिताब देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ देर पहले उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी नतीजों पर मुखातिब थे अवाम से। इस मौके पर उन्होंने बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया अपोजिशन पर। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगाया। That we are on the road to victory and we will make America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much. America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much, everybody. बराह रास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले इंतखाबी नतीजों पर खिताब कर रहे थे, आवाम से मुखातिब थे। बड़ी कामयाबी मिलने का उन्होंने इस मौके पर दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने अपोजिशन पर इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम लगाया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार नतीजे आने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हमें बड़ी जीत मिलेगी। साथ ही हम जश्न की तैयारी भी कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ देर पहले से आप खिताब देख रहे थे जो आवाम से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि शानदार कामयाबी उन्हें मिलने की उम्मीद है। और अगर हम नतीजों की बात करें कि तो अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नतीजों की अपडेट सुबह से हम आपको लगातार देते आ रहे हैं। अमेरिका की 50 में से बेशतर रियासतों के मुतवक्के नतीजे आ चुके हैं। जो बाइडेन सदर बनने की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने दावा भी कर दिया है कि उन्होंने अपनी ट्वीट में यह दावा किया है कि वो चुनाव जीतने वाले इंतखाबात जीतने वाले हैं और इसके लिए पुरुम्मीद भी हैं। और कुछ देर पहले आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। तो अमेरिका में हो रहे चुनाव और आ रहे नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी हुई, हिंदुस्तान की भी निगाहें टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान के तनाजुर में अमेरिका का इंतखाब क्या कुछ कहता है, ये भी हम लगातार जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आलमी उमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब जुड़ रहे हैं। आपका खैर मकदम करते हैं वक्त देने के लिए मुहिबुल हक साहब, शुक्रिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का खिताब हम सुन रहे थे, अपने नाज़रीन को सुना रहे थे मुहिबुल हक साहब, और दूसरी तरफ जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं और ट्रंप भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नतायज की बात करेंगे तो नतायज कहीं ना कहीं जो बाइडेन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका तज्जिया? देखिए, जो ट्रंप की स्पीच है मुझे ये फेयरवेल स्पीच ज्यादा लग रही थी जी। वो विक्ट्री का कोई यानी वो इंप्रेशन तो ये दे रहे थे कि जैसे वो जीत रहे हों, लेकिन ये फेयरवेल स्पीच लग रही थी। क्योंकि अभी आप देखें अगर रिजल्ट भी
तो तकरीबन 225 वोट उनके हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बाइडेन के, और इनके 213 है, तो 12 का ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट मार्जिन तो है ही है। तो ऐसी हालत में ये अपने सपोर्टर्स को इंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो बार बार कह रहे हैं कि बेईमानी हो सकती है और इलेक्शन में वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, ये ऑलरेडी एक डिफेटिस्ट माइंड सेट की निशानी होती है। तो वैसे रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अब ऐसा लगने लगा कि शायद ट्रम्प अंदर अंदर अपनी हार महसूस करने लगे हैं, और ये जो स्पीच थी ये सिर्फ फेस सेविंग स्पीच लग रही थी। मुलबुल हक साहब, आपने कहा कि फेयरवेल स्पीच ज्यादा लग रही थी, ये भी काफी अहम हो जाता है कि तासुरात, चेहरे के तासुरात किसी शख्स के क्या कहते हों, क्या आप उनके तासुरात से ये अंदाजा लगा रहे हैं? तासुरात से भी, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो वो जो इंथुजियाज्म और जो शोखरोश और जो विक्ट्री की बातें होती हैं, एक आदमी जब जीत रहा हो क्लियर कट जिस तरह से बोलता है, वो नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इलेक्शन चोरी वगैरह की बात और वोट चोरी करने की बात, इस तरह की जब बातें होती हैं तो इससे पता चलता है कि वो इलेक्शन को मशकूक बनाना चाहते हैं, यानी नतायज अगर उनके फेवर में नहीं आए तो उसे वो मशकूक बनाएंगे, और इस तरह से जो आमतौर पर इल्जामात होते हैं इलेक्शन में हारने के बाद, तो उस तरह की बातें अभी से वो करते हुए नजर आए। तो ये साबित होता है कि शायद उनको ये मालूम हो गया है कि वो इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं। वैसे अभी बताना मुश्किल है कि कौन जीतता है। जी बिल्कुल, और इस बात से ये तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टियां लगातार सरकार पर ये हमले करती रही हैं और साथ ही साथ इलेक्शन में हो रही धांधली को लेकर सवाल उठाती रही हैं। तो अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले मुखातिब थे लोगों से, आवाम से, उस मौके पर कहते हुए नजर आए कि इलेक्शन चोरी का इल्जाम उन्होंने लगाया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन रेस में आगे जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें मुलबुल हक साहब, तो जो बाइडेन अगर सदर बनते हैं तो हिंदुस्तान के लिए वो कैसे होंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है। उसमें इंडिविजुअल कोई मानी नहीं रखता, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो। पॉलिसी आज की डेट में एक चाइना फैक्टर ऐसा है जिससे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, और चाइना फैक्टर में उनके लिए जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हमारी ज्यादा बढ़ जाती है हिंदुस्तान, यानी उनकी ऑफशोर बैलेंसिंग की पॉलिसी हमेशा से रही है, या जिसे काउंटर बैलेंसिंग चाइना की पॉलिसी रही है। तो ऐसी हालत में उनकी ये स्ट्रेटेजिक मजबूरी और जरूरत भी है कि वो हिंदुस्तान को पैम्पर करें और हिंदुस्तान को मुतमईन करें। दूसरी अहम बात कि जिसे समोसा कॉकस कहते हैं, यानी जिसे हिंदुस्तानी कॉकस कहते हैं, तकरीबन 18 लाख की आबादी है वहाँ पे, 20 लाख की तकरीबन आबादी हिंदुस्तानियों की, तो वो एक बहुत इफेक्टिव कॉकस है, और हिंदुस्तानी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो। तो हमारी जो डीलिंग है हिंदुस्तान की वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, और कुछ पॉलिसी कंसिस्टेंट होती है, और आज की डेट में जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसको देखते हुए हिंदुस्तान अमेरिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मुलबुल हक साहब। तो मुलबुल हक साहब अपना तज्जिया दे रहे थे अमरीकी सदारती इंतखाब पर आने वाले नतीजों को लेकर। वहीं कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुखातिब थे अवाम से, इस मौके पर उन्होंने जीत का दावा किया। तो वहीं जो बाइडेन भी ट्वीट करके जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रेस ये कहां पर जाकर रुकेगी ये देखना दिलचस्प होगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पल पल की अपडेट अपने नाज़रीन तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।